जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 515th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. So today being Sunday, we are going to do the weekly analysis for this coming week, and we will discuss everything that is going around in global markets. We will cover the other markets and our markets, which is Nifty BankNifty stocks and commodities, cryptos, and Forex. All the asset classes we will cover, and we will see what's in store for this week because things are getting uh, little volatile. A lot of news flow over the weekend, and you have war news, you have rate hike news, and a lot of things are there. So welcome, and let me tell you that today I was not supposed to take the live session because we had training on Saturday and Sunday. So yesterday and today we had training, so that takes almost entire day. But because certain events have taken place in the last 48 hours, that calls for urgent US Fed meeting. So that also calls for our urgent meeting. So that is why I scheduled this live session, and I'm trying to pushing my boundaries to take this live session. Okay, so welcome. Good evening. ओके सो क्या हो रहा है एंड क्या चल रहा है दुनिया में आजकल. सो बहुत सारी बातें वैसे तो शेयर करने के लिए बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एज पर द एंटिसिपेशन एंड दे आर हैपनिंग प्रेटी क्विकली. सो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं आसपास एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी if some of my wild predictions come true. And one of the wild predictions that I made this week is that we are going to see a market that used to that used to be there before the 1990s, and that is something which is very unique because 99% of the trading population don't know what happened before 1990s. I mean, what used to be the texture of markets and how the markets used to move. So even I was not there before 1990s, but we have read history, we have done our research and all those things. So uh, in yesterday's and today's training also, I shared a lot of things. I shared a lot of views about the coming future in terms of politics, society, economics, markets, and how these things will evolve over a period of next 5 to 7 years. So let us have a look at these markets, correct, and what is happening on the news front and all. So सबसे पहले charts लेने के पहले हमें कुछ news flow पे बात करना होगा. And what are the news items that have taken place recently? Number one, you have global news as well as some local news. So local news यहाँ पे एक बार लिखते हैं that some CBI has booked the ABG shipyard or something in case of some 20,000 crore scam, and then all these banks have exposure and all these things. So there's nothing new, हमारे जो bankers हैं आपको पता ही है what to say. And one famous banker is pleading US Fed not to repeat the 2013 scenario of taper tantrum. But these bankers, I tell you, publicly you can't say much, but आप समझ जाओ, ठीक है. ये भी एक तरीके के एक आइटम ही है. Anyways, so the CBI booking the ABG shipyard company in this scam. So many banks have exposure. ICICI Bank का exposure है, private banks is ज़्यादा हैं इसमें. So obviously they will take a hit, but I don't think this news is something new. I mean, it is such news are always around the corner, but definitely एक sentiment जो है spoiled होगा, and this will be one local news that will impact the bank nifty, especially in the private banking stocks. Now, on the global front, you have Mr. Vladimir Putin, who is almost ready to slaughter the Ukrainians. So, whether it will actually happen and to what extent it will happen, that is something which we will have to see. Nobody can forecast those things. However, one thing is pretty sure, and that is the USA, the country which was in a leadership position in the last several decades,
I clearly see the demise of USA in terms of a global leader, in terms of a global watchdog. अंकल सैम अब रिटायर हो चुके हैं यहाँ पे. देयर इज अ लीडरशिप, बिग टाइम लीडरशिप क्राइसिस प्रिवेलिंग इन द यूएसए, and I can clearly see the fall of USA over the next 10 years or 15 years. Now what will happen as a result of this vacuum of a leader as a watchdog, as Uncle Sam, is that the relative superpowers, say Russia, China, India, and there is one dog called Pakistan, that will also try to take this vacuum, to fill this vacuum. Now India definitely will be on a back foot. India's policies, foreign policies, and all these things are very uh, concrete, so they will not try for any hegemony, any sort of leadership role, but they will not be left behind. So it is pretty much Russia that will try to push back the USA and become the next watchdog, become the next superpower. It is already a superpower. I've always believed that Russia is a far bigger military power than USA, be it any front. And China will also try. China will try its chindi chori, as we say. It will also try, but I think Russia is going to dominate here. And in between those little tiny dogs like North Korea and all those things, they will also try their missile testing. वो अभी तक मिसाइल ही टेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी बीच बीच में एक न्यूज़ वगैरह जो है यहाँ पे रिलीज करेंगे. ओके, on the left hand side you will have the Gulf countries. They will also try to do some क्या बोलूँ मैं, आप समझ रहे हो. ठीक है, तो वो भी कुछ ट्राई करेंगे, पर्दा बुर्का हिजाबी एंड ऑल दोस बुलशिट. They will also try, but nothing will happen. Okay, so as a result, what are we looking at? Okay, as a result, what are we looking at on the global fabric in terms of geopolitics? We are looking at definitely a higher VIX regime going forward. ठीक है, this is something which is for sure. So चाहे यूएसए का रिजीम चले, रशिया का चले, जिसका भी चले ना चले, एक चीज चलने वाला है, वो है विक्स. ठीक है, विक्स जो है ये राज करेगा, बाकी कोई राज करे या ना करे, विक्स राजा जो है ये राज करेंगे. सो वी आर एंटरिंग इनटू अ हाई वॉलेटिलिटी विक्स regime. Now, interestingly, if you open the chart of VIX, you will see that the last 13 years there was a one-way down street in terms of volatility. The global volatility post 2008, right? VIX has been suppressed, and in last couple of years, it is trying to bounce. Okay, it is trying to rise from the ashes and establish a moderate reading, which is approximately, you can say, plus 20, यानी 20 to 40 के स्लैब में ये आना चाहता है. In the last 13 years, it has been suppressed and oppressed to remain below, you know, 10, 12, 13, below 15. So this regime was a long decade old regime जहाँ पे volatility एकदम subdued थी. In between हर 2-3 साल में कुछ events होता था और volatility जो है spike वगैरह करती थी, markets में correction होता था, markets again used to bounce back and create a new highs and all those things were there. But with the 13-year pathetic monetary policy and all those things by the US Fed, and now there is a leadership crisis, a political crisis in the USA. This is a classic case of a demise of a superpower. So the recipes are all there, okay, and this would create lot of uncertainty. कभी आपको नॉर्थ कोरिया का न्यूज आएगा, कभी आपको सऊदी का न्यूज आएगा, कभी सऊदी बॉम्बिंग द येमेन का न्यूज आएगा, चाइना बीच बीच में एक दो वायरस रिलीज करते रहेगा, कभी ये कभी वो, so all this will lead to a lot of bombardment of news. Now we are living in a social media regime where you don't know which news is correct, which news is false, true, etc., etc. So all this will create a higher VIX regime. Now, what does this mean for a trader? It means lot of trading opportunities, correct? It means price action traders can definitely have the best possible market scenario, okay? And if you are good at price action, if you are good at reading the chart, if you are good at managing your positions, which is managing your psychology, if you manage yourself, your trading is going to be way better in the coming time. Okay,
Now, what type of traders will suffer? Number one, those who are playing with some wild view, okay, not reading the chart properly, not respecting the price action, not paying enough attention to the macros right now, and just playing for some bizarre targets. Okay, there are some ultra bulls, there are some ultra bears. So it's these kind of people who are going to be badly trapped on some side of the game. Okay, whereas if you are a moderate trader, if you are a smart guy, you will get your opportunities. You need to play your shots correctly. So position sizing is something which needs to be taken care of. Number one, why? Because higher VIX regime calls for a higher range. There will be increase in range. Okay, so you need to cut down your positions because the range is going to increase, volatility is going to increase. You need to put your stop losses in the system, okay, or else uh, you will face a lot of slippage. And plus you have to be open minded. Okay, so all in all, you have to be a very very astute trader in terms of position sizing, self management, discipline, and having a open mind. And this is the year of Saturn, and Saturn stands for all this quality. And there is no doubt that oil is spiking to a recent all time high. समझ रहे हो बात को? ये तो कुछ एक तथ्य है, कुछ एक बात है. दूसरी बात कि अभी क्या न्यूज आई है दैट रशिया इज गोइंग टू अटैक यूक्रेन एंड ऑल. सो यस, दे विल अटैक, व्हाई नॉट? They will attack. It's just a matter of time. Okay, Uncle Sam cannot do anything because there is no leader as such. So Uncle Sam is not in a position to intervene, and Russia is definitely taking advantage of that thing. There's a vacuum in leadership over here. So एक तो ये न्यूज़ है. दूसरा क्या न्यूज़ है that because of this Russian news, the US Fed has announced for what, for a emergency meeting on Monday night, which means हमारा बाजार जो है क्लोज होगा, and Tuesday morning you will get a shock of a rate hike, a surprise rate hike. Okay, so this rate hike can happen on Monday itself. If in next 24 hours, if in next, yes, 20 hours, अगर रशिया जो है कुछ डेफिनेटली कुछ यहाँ पे हिट करता है यूक्रेन को, ओके, और some aggressive aggression takes place here, then US Fed is definitely going to hike. It's just a matter of time. Okay, so they may also announce that, okay, next week we are hiking, just to see how the markets are reacting. And they will wait for next like 7 days to see the development on the Russian Ukrainian front, and then they will announce. So there is a chance that they can hike on Monday itself. ये भी एक chance है. Or else they will try to play hide and seek by announcing a tentative date and buying some time to see how the Russian and the Ukrainian things work out. Because you need to understand, US Fed, if it starts the rate hike, it cannot backtrack at least for next 9 months. Okay, क्योंकि ये सबसे बड़ी सेंट्रल बैंक है, ये ऐसे नहीं कर सकती कि आज हाइक कल रिड्यूस, ऐसे नहीं होगा. ओके, इफ इट स्टार्ट्स देन एटलीस्ट 3 क्वार्टर्स ये बैक ट्रैक नहीं कर सकते, एंड देन एवरीथिंग विल गो फॉर अ टॉस. सो एक बहुत ही बड़ा एक थोड़ा कंफ्यूजन वाला एक माहौल है. एंड मंडे इज अ वेरी ट्रिकी डे बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज कमिंग. इफ दे हाइड द रेक देन ट्यूसडे यू कैन हैव a big sell off. If they don't hike, then Tuesday you can get a big bounce in the market. So everything will depend in the next 24 hours as to how the US Fed is going to react and what the Russians are going to do. तो फिलहाल इस मार्केट को मेरी एडवाइस होगी कि आप कोई बहुत बड़ा मीडियम टर्म पोजिशनल टर्म वगैरह इससे नहीं देखना चाहिए. टेक वन डे एट अ टाइम, बी अ ट्रेडर, टेक वन डे एट अ टाइम, एंड लेट्स सी हाउ नेक्स्ट वीक अनफोल्ड्स. एंड देन हर वीक ऑन वीक हम जो है लेते चलेंगे इस मार्केट को, जब तक कि सर्टन थिंग्स डू नॉट गेट सेटल्ड, एज इन यूएस फेड क्या कह रहा है ये सेटल हो जाए एक बार, या रशियन यूक्रेनियन की चीज़ें एक बार सेटल हो जाए. Now, ideally or historically, war news have produced major bottoms in the market. Okay, so the war news has certainly produced good bottoms in the market. Now, the only problem here is this market has already been up for the past 24 months
without a major correction. If it were a normal market, I would have boldly called for a contrarian view, which is any fall that comes, be an aggressive buyer. War news will produce a bottom. However, this time, because we are already in a very, very vertical up move since last 24 months, plus there is a outstanding $19 trillion worth of stimulus, crazy stimulus, right? And this needs to be sucked out from the system by the US Fed. So you have war plus you have rate hike scenario. ये डुअल कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है मार्केट्स के लिए. Okay, because you see, and plus the macros are going to further uh, deteriorate because Russia is obviously a natural resource exporter. ठीक है, तो अगर रशिया अगर वॉर में ज़्यादा अगर इंटरेस्ट लेता है, जो कि वो लेगा, वाई नॉट. ओके, सो व्हाट विल हैपन इज, ये जो है काफ़ी सारी चीज़ों के रेट हाइक कर सकता है, सप्लाई कंस्ट्रेंट कर सकता है. इट विल ट्राई टू शो इट्स मसल पावर इन सेगमेंट्स वेयर इट इज़ अ डोमिनेंट एक्सपोर्टर सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, सो इस वजह से भी इन्फ्लेशन मैसिवली रॉकेट कर सकता है. नाउ जस्ट इमेजिन कि देयर इज अ वेरी हाई इन्फ्लेशन, और आपने लास्ट वीक अभी देखा होगा कि यूएस का इन्फ्लेशन व्हाट एट 40 ईयर हाई है, करेक्ट. With war type of a situation and a pending rate hike, this can actually go crazy. एंड लास्ट 13 ईयर्स यूएस फेड जो है इसको आर्टिफिशियली मैनेज कर रहा था. बट इफ यू रिमेंबर, पिछले 2 साल से जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट्स को आप हमेशा के लिए आप रिगिंग नहीं कर सकते. यू कैन रिग इट फॉर सम शॉर्ट टाइम, करेक्ट. सो देर विल कम अ टाइम व्हेन you will be boomeranged by your own false narratives and false steps that you have taken since last 13 years. And ये वही टाइम आ रहा है जब यूएस फेड इट इज कॉट इन इट्स ओन एक्ट, कि अब इन्हें ये नहीं समझ में आएगा कि हम करें तो क्या करें. अगर रेट हाइक करते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स क्रैश, इमर्जिंग मार्केट्स की धज्जियां उड़ जाएंगी. जितने आपके यूनिकॉर्न्स है ना, आजकल बहुत यूनिकॉर्न आ रहे हैं, ठीक है, यूनिकॉर्न्स एंड स्टार्टअप्स, स्टार्टअप फंडिंग एंड ऑल दीज, they will go bust because there will be the liquidity will be sucked out of the system. Inflation already 40 year high है. वॉर अगर अनाउंस होता है या एनी काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट हैपेंस हियर, सप्लाई कंस्ट्रेंट ऑलरेडी आएगा, तो इन्फ्लेशन भी रॉकेट करने लगेगा. सो इट विल बी अ लिटिल टाइट सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड. ये इन शॉर्ट ये मतलब है. और हमें एज अ ट्रेडर, हमें इस समय आई थिंक वी हैव टू बी केयरफुल. Okay, generally, as I said, war news produces a bottom, a credible bottom. But what if the bottom is here? What if the bottom is here? अंडरस्टैंडिंग. सो मेरी तो ये एक व्यू होगी कि लेट्स टेक वन डे एट अ टाइम, वन वीक एट अ टाइम. ओके, लेट्स tread the path carefully because of these two reasons, that there is a $19 trillion liquidity which has to be sucked out from the market, and then there is this geopolitical crisis. There are three fault lines right now. One is the Saudi Yemen on the left side, then on the top you have Russia and Ukraine, and on the right side there is this Chinese which is trying to do something. Don't think that corona is gone and it will not do anything. ये कुछ ना कुछ वापस गड़बड़ करेगा. Okay, so there are these geopolitical fault lines right now. Crude oil is already rocketing. That is again a problem for India. यू सी, मैंने आपको लास्ट वीक एक एक्सप्लेन किया था कि आरबीआई जो है या तो यूएसडी आईएनआर को मैनेज करेगा, कर्व करेगा, या फिर इट विल होप दैट ऑयल गोज डाउन, करेक्ट. नाउ यू सी ऑन फ्राइडे व्हाट हैपेंड. ऑयल स्टार्टेड टू रॉकेट, ठीक है, ऑयल स्टेबलाइज, टुक सपोर्ट एंड ऑयल स्टार्टेड टू मूव अप, and USD INR was sold heavily by the RBI on Friday at 75.5. Now, over the weekend, because of this Russian news, because of the CBI news, that will again put pressure on the Bank Nifty and all. Again, USD INR will also come under pressure. So, with rising USD INR, rising US dollar, rising crude oil, it's going to be very nasty. अगर मार्केट तोड़ने पे आया तो अच्छों को तोड़ देगा. Okay, I have to be vernacular here. So let's be careful.
बस ये एक वार्निंग, ये एक टेक्सचर जो है, बैकड्रॉप है मार्केट का, इसके साथ हम चलते हैं कि लेट्स बी केयरफुल, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट सीन द मार्केट्स प्रिवेलिंग बिफोर 1990s। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, गल्फ में वॉर होता था, क्रूड ऑयल डबल हो जाता था, ट्रिपल हो जाता था। Okay, there used to be very volatile market conditions, huge upswing, huge downswings. So are we ready to face all these things? The answer is no, clear cut no. Okay, जब लोग 10% के निफ्टी करेक्शन में अपने स्टॉक को एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस टाइप का मार्केट रेजिम अगर आ गया तो वहां पे क्या होगा, ओनली आई कैन इमेजिन। एंड सिंस सो मेनी वीक्स, सो मेनी डेज, मैं इसी चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा था। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, सो यू नीड टू चेंज योर हैबिट राइट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। ठीक है, ओके। सो अब आते हैं ये कुछ न्यूज़ डेवलपमेंट एंड लेट अस सी व्हाट्स इन स्टोर। सो फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट कोलैप्स्ड, fell by 1.7%. Nasdaq again is the victim over here, again down by 3%. Now this is something but yes, this bottom is very nice, so Nasdaq has good support over here. However, agar Russian news and all these things starts to uh, take a nasty turn, then definitely why not, it will also fall. कोई रूल थोड़ी है कि ये होल्ड करेगा। सपोर्ट अच्छा है, टेक्निकल सपोर्ट अच्छा है, अगर मैक्रोस ज्यादा खराब होते हैं तो डेफिनेटली फिर ये ब्रेक होगा, और एल्स I think we have made a pretty good bottom, and this definitely calls for some more upside over here. Okay, so only in a very bad condition, I think it will break down on a closing basis, or else this can be a good secondary test for one up move over here. Similarly, अगर हम यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो these markets they are yet to react, so probably tomorrow morning you will see a heavy gap down in these markets. Okay, and we saw the ACWI again hitting by 2%. Okay, so this market, इसको हमने 15 to 20 days पहले एक बार इसको लिया था हमने। Okay, now this market clearly shows that we have seen a massive distribution already, and there was this first attempt to breach the head and shoulder structure, breach the 200-day moving average, and then we bounced back nicely. But again, I think again we are coming back here tomorrow. Okay, so this will be a very critical situation. Why? Because we are about to make a double bottom, और अगर डबल बॉटम स्ट्रक्चर के साथ लोअर हाई फॉर्मेशन के साथ फेड वगैरह हाइक कर दे, रेट हाइक हो जाए, रशिया अटैक कर दे, अगर ये टैंक करता है, देन आई थिंक इट इज गोइंग टू टैंक वेरी बैडली। Okay, because a structure like this is very dangerous structure. So there can be a equally strong bounce. If everything cools off, there can be equally strong bounce, and if they take a nasty turn, there can be equally bad drop. And the only problem is ये चीज हमें ट्यूसडे को पता चलेगा थ्रू अ बिग गैप अप और अ गैप डाउन, सो वी कांट डू मच ऑन मंडे एक्सेप्ट hedging yourself. Okay, now similarly ACWI down tha, EEM emerging market was down, and one more thing is that US VIX was up by 15%. So if I take a look at the chart of US VIX, again look at the spike. This was the last time, last reading 40, and again it went, took support at 200-day moving average, and again it has spiked. So this VIX is slowly, gradually, if you can visualize, it is gearing up. It is making a rounding bottom structure here. And in coming months and coming years, we are going to see the higher volatility regime, which used to prevail in the previous decades. Okay, so this will definitely be not good for new age traders, especially last couple of year old traders. Let us talk about currency. So US dollar has taken support at the expected level, and US dollar has bounced back. US dollar जितने भी currency traders हैं, you need to keep in mind that range expansion बहुत ही wildly हो सकता है. Okay, so please be very careful. And जो forex NSE futures पे trade करते हैं, all the pairs you need to add 1 rupee on either side. So मैं इस week के लिए कुछ range बताता हूँ. USD INR we are still bullish and we will continue to be bullish. So USD INR में हम 74 as a base देख रहे हैं. On the upside 77 का window खुल चुका है. Anything above
say 76 this time will definitely trigger a move till 77. So USD INR bullish है, and एक अच्छे डिप पे 74 एंड हाफ वगैरह पे आप जो है बाय कर सकते हो. 75 to 74 भी आप बाय कर सकते हो if you are targeting for 76 and a half and 77. Next is your Euro INR. So Euro INR right now we are bearish, and Euro INR is taking good resistance at the level of say 86 and 86.10. And on Friday, Euro USD has also fallen very nicely. Okay, but with the macro news, USD INR will definitely try to depreciate. That will keep the Euro INR from falling much. Still, I think we will go with a range of say 86.5 to 85. Okay, for the time being. फॉर द टाइमिंग 1.5 रुपए का ये रेंज है 86.5 से 85 की तरफ. एंड नेक्स्ट वीक वी विल अगेन सी व्हाट हैपेंस. ऑन द लोअर साइड इट माइट डू 84.5 ऑल्सो. ऑन द अपसाइड 87 भी हो सकता है. सो आप ये रेंज एक लेके चलिए 86.5 87 ऑन द हायर साइड, नीचे में 84.5 to 85. देन यू हैव योर जीबीपी आईएनआर. जीबीपी आईएनआर में जैसा कि लास्ट वीक एक हमने डिस्कस किया था कि इट कैन मूव अप बाय 25 पैसे. सो जीबीपी आईएनआर में सबसे बड़ा एक ट्रिगर हो चुका है. सो जीबीपी आईएनआर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. 101 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर 103.5. सो इसमें एक मेजर रेंज एक्सपेंशन हुआ है. Okay, so GBP INR you have to be very careful, play very less quantity because it can be really volatile. Okay, and it can swing both the ways. I don't see it going below 101. We will try to play for the long side if it comes near 101 for target of 103.5. Right now it is at 102.25 or something. So you can short, but the final stop loss here should be 102.5 etc. ज़्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है because it is trying to inch closer toward this and then it might fall. तो ये एक रेंज है. इस साइड आएगा तो बाय करेंगे, इस साइड आएगा तो शॉर्ट करेंगे. अभी मंडे के दिन 102.25 से 102.5 पे शॉर्ट कर सकते हैं, बट 102.5 क्रॉस हुआ तो जस्ट एग्जिट फॉर द टाइम बिंग. वी विल सी दिस लेटर. ठीक है, आखिरी पेयर है जेपीवाई आईएनआर. सो जेपीवाई आईएनआर वी हैव बीन बेरिश एंड इनफैक्ट अच्छा मूव होना चाहिए था, बट द स्पाइक इन यूएसडी आईएनआर नेगेटेड दैट मूव ऑन फ्राइडे. सो जेपीवाई आईएनआर मैं समझता हूँ इस समय 65.5 is the ceiling. Okay, and on the lower side I think you have scope till 63.5, practically speaking 64. ठीक है, तो अगर आप यहाँ कहीं शॉर्ट कर रहे हो 65 तो 64 के आसपास कवर कर लो, एंड देन अगेन वी विल रिव्यू ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, सो फॉरेक्स मार्केट विल बी वेरी ट्रिकी. रेंज एक्सपेंशन होगा दोनों साइड में, सो प्लीज मैनेज योर पोजीशंस फॉर सम डेज. व्हेन थिंग्स कूल डाउन देन अगेन हम इसे रिव्यू करेंगे. अगेन आई एम सेइंग पोजीशन साइजिंग को एकदम कम रखना फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट वीक. ठीक है, लेट अस हैव अ लुक एट द व्हाट let us have a look at the commodity markets very quickly. सबसे पहले बात करेंगे crude oil, because the WTI crude oil has surpassed 91 levels, and if you remember since many days I have been maintaining this bullish stance that 7100 7200 it is going to be our first target. Last पूरे week में I gave this buy entry over here for this same target 6850, then 71 72, and it has worked brilliantly, and I hope many people should have benefited from this view. Now, just to give you a bigger perspective as to how far the crude oil can go on the MCX as well as on the WTI, because this is going to be very critical macro. So as you can see, this is the long term MCX chart, and I don't have the data before the 2015, but in 2013 it was trading somewhere I think 7,700 etc. So I foresee a crude almost hitting this 8,500 level if we do not crack immediately. Okay, so crude में next जो एक major target है ये है 8,400 8,500. बट ये situation तब आएगी जब
एक्चुअली में रशिया जो है एक प्रॉपर वॉरफेयर में जाएगा एंड योर यूएसडी आईएनआर इज आल्सो मूविंग हायर. ओके, this much up move cannot come only on the back of WTI crude, it needs currency depreciation also. ठीक है, तो ये व्यू अगर हम लेके चल रहे हैं, immediately 7200 is your immediate target. As you can see, we have made a inside bar. This is an inside bar, and Monday there should be a big gap up, and this will lead to 72, 73, 74 in the very very short term. So thereafter, if it goes till 73 74, then your 6500 will become a base. तो आपका 65 जब तक क्रैक नहीं करेगा, हम 8500 के टारगेट के साथ ही चलेंगे. एंड माइंड यू, इट विल बी वेरी वॉलेटाइल, रेंज बहुत बड़ा होगा, तो आपको बहुत ही आराम से इसमें काम करना होगा. ठीक है, इमीडिएटली एज आई सेड 71 72 ये कल तक का टारगेट है, विच शुड बी डन एंड डस्टेड. एंड देयर अपॉन अगेन we will play with 6500 to 6600 as a base for this 71 72, maybe 7300 also immediately. और ये 8,500 का विंडो हम मिड टर्म के लिए ओपन रखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द मैक्रोस. ठीक है, सो दैट्स द व्यू गोइंग फॉरवर्ड. एंड $91 के ऊपर WTI, मैंने पहले ही कहा था कि 112 मिनिमम टारगेट है, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी dangerous for the Indian markets as well as global markets also. Now, let us have a look at the natural gas. Now, natural gas is one key commodity which will be center of attraction in the Russian and the Ukrainian crisis, because natural gas is a commodity that is widely controlled by Ukraine. Now, इसमें हमने एक लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट किया है फ्राइडे के दिन. ओके, आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने इसमें वापस से एक लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट किया फ्राइडे के दिन एट 295 to 300 रेंज. सो इट इज almost closed over there only. And now for tomorrow session, if there is a gap up opening, if there is a gap up opening above say this 305 or 307, then this trade should rocket right away, and you should see at least 325 and then this pending gap over here of 350. So on the lower side we will watch this level of say 280. We will watch very closely. If 280 is broken, then we will exit this trade. If 280 285, if this zone is holding up, then very well we will keep this trade. And we will expect natural gas to again go back till 350. If 350 is crossed, then I think it is going for 450. Okay, it is going to take a nasty turn in near future. So this is how I think natural gas should behave. I'll be very surprised if natural gas do not bounce from this 290, 285, 280 slab towards 350 and then towards 450. That's a massive target. Okay, so ये है natural gas पे view. Again, रशिया यूक्रेनियन न्यूज की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज ड्रिवन होगा, सो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होगा ये. कॉपर की बात करें तो कॉपर में एक अच्छी खासी ब्लास्ट होने के बाद वापस से ये आ रहा है. सो कॉपर इज स्टिल बुलिश, and copper may finally we have got this breakout. So copper again because of this geopolitical it will be very volatile, needless to say. but अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इसे बाय कर सकते हैं. मैं समझता हूँ ये एक ठीक ब्रेकआउट रीटेस्ट, ये एक सही जगह होगा यहाँ पे, which is say 756 के आसपास, somewhere here. The only thing is you will have to keep stop loss little wide, and that is say 745. So if this move is pretty much intact, then we should go little lower, and from the 756 we should again bounce back, and targets will be your 820 minimum and then 840, all those levels. So this has given a breakout. Let us hope that it gives a retest and it protects the stop loss and then blast all the way towards 800, 820, 840 levels. Okay, वेरी क्विकली निकल को देख लेते हैं. निकल 1766 पे इस समय ट्रेड कर रहा है. निकल में कोई फ्रेश ट्रेड मैं नहीं दूंगा, बट दीज थिंग्स इफ यू आर ट्रेडिंग प्लीज बी वेरी केयरफुल. जियोपॉलिटिकल के समय base metals and all these things, they can behave very very randomly, and there can be unnecessary undue movements. So please be careful, trade with stop loss. Aluminium new high ban chuka hai, as you can see, and this is what we were expecting, that in this move at least
it should go till 265 to 70. Now I would say take a break from aluminum. ठीक है, take a break from aluminum because even this new high got sold off, and that too with a very very large volume. So I don't like this thing. I don't like this sort of a price action. So nevertheless it can still go up, but actionable trade बहुत ही कठिन है. लेड आप होल्ड कर सकते हैं. लेड पे जैसा मैंने पहले बताया, इट विल स्पाइक एनी डे, या तो स्टॉप लॉस हिट या तो स्पाइक. जिंक बहुत ही फैंटास्टिक, इसमें 312 का जो अपना टारगेट था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है. इट हैज हिट दिस लाइन, देयर वाज दिस गैप दैट हैज गॉट फिल्ड. नाउ जिंक अगेन, इफ यू वांट टू बाय, then you can buy at say 300, keep 295 as a stop loss. ठीक है, buy at 300, keep 295 as a stop loss, strict stop loss. Okay, if it is hit, then it is hit. Now why? Because we have completed one cycle. Now still there is a scope for larger up move. But what if it wants to do a deeper retracement and then move up? So that is why we will play this triangle breakout. We have already played this. Again, you can play, no issues, but keep 295 as a stop loss. And next time, if we surpass 312, zinc is going straight away new high towards 340. So यहाँ पे 5-6 रुपए का रिस्क है, एंड स्ट्रेट अवे 30-40 रुपए का रिवॉर्ड है, एंड दिस विल कम इन वन डे. ठीक है, ये 312 से 340 ये एक या दो कैंडल में हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. सो अगेन दिस कैन बी वेरी बिजार मूव. आप देख सकते हो हर जगह एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की खबरें आ रही हैं. सो प्लीज बी केयरफुल. So that's about the base metal. Crude, NG we have covered. Gold, silver ले लेते हैं. So gold obviously geopolitical crisis है तो gold will be bullish. And again gold has reached this target of 49,000, 49,200. So gold is again bullish. And I think for this week I will avoid gold. Why? Because if the chaos subside, there will be decline. If the chaos aggravates, there will be again massive up. So it's like very very 50-50 type of a scenario. We are already in a W-shaped pattern over here, and this has been always a resistance zone. So gold में इस week में थोड़ा सा Monday को especially avoid करना चाहूँगा, because let us see how the rate hike happens and the Russia behaves and all those things. Overall ये थोड़ा resistance वाला zone है 49,200 and 300. Please be careful because here we can see some trouble. We can see some profit booking till 48,300. Okay, so if there's no major catastrophe, I think if I see gold here, then very carefully we can short for 1,000 point. Very carefully, yeah, because there can be a breakout also. So we have to be very carefully. मैं तो suggest करूंगा avoid करिए, छोड़िए, रिस्क लेने की क्या जरूरत है. But yes, this is a zone you can watch 49,300, 400. यहाँ पे अगर weakness वगैरह आता है तो 1,000 पॉइंट की पुल बैक, I think it will be healthy for gold also, maintaining the overall bull market trend. ठीक है, सो अगर ट्रेड मिला तो मिनी लॉट्स वगैरह में विद स्टॉप लॉस यू कैन ट्राई, नो हार्म. सिल्वर की बात करें तो अगेन सिल्वर ट्राइंग टू रीच द 64,000 लेवल. आई थिंक सिल्वर जो है ये बुलिश है, बट इस समय मैं इसमें कोई ट्रेड देना नहीं चाहता हूँ. ठीक है, सो दैट्स ऑल ऑन द कमोडिटीज फ्रंट. वेरी क्विकली बिटकॉइन एंड इथेरियम, एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टॉक. सोलाना के बारे में इस समय जानना चाहते हैं. सी वी हैव टू कवर इक्विटीज ऑल्सो, सो थोड़ा सा मैं सिर्फ बिटकॉइन वगैरह लेता हूँ. ठीक है, और okay, yeah, so now bitcoin, if you recall recently after this breakout from this falling trend line, यहाँ पे हम bullish हो गए थे, and this was our target. This target got hit 3-4 days back around 46,000 somewhere here, and now we are back testing. Now you have to be, let me tell you, very careful in bitcoin as of now, because it is going to be the first time when crypto became almost a mainstream tradable financial instrument or crypto instrument, and there is a geopolitical crisis. ठीक है, there is a geopolitical crisis. So uh, we have no idea as to how cryptos behave during this geopolitical crisis. ठीक है, let me, somebody is spamming, जो spam करेगा सीधे ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है, ओके, सो क्रिप्टो पे प्लीज बी केयरफुल. बहुत ही बिजार मूवमेंट हो सकता है. जनरली व्हाट आई फील
is they should go up, not much up, but at least they should go up. Reason being, whenever there is a catastrophe, the millennials, they will hate the fiat currency setup and they would trust these cryptos more. Okay, and we have seen all those things happening in Venezuela and all those things. ठीक है, तो एक सिमिलर चीज यहाँ पे हो सकती है, बट नेवरदलेस देयर इज अनदर थिंग दैट इज कमिंग एंड दैट इज रेट हाइक. सो इट इज़ अ वेरी ट्रिकी एंड मेसी सिचुएशन. सो मैं समझता हूँ यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म व्यू तो लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. येस, दिस इज़ अ गुड बॉटम, बट वी स्टिल हैव नॉट क्रॉस द 200-day मूविंग एवरेज. ठीक है, सो क्रिप्टो में एक्सट्रीमली केयरफुल यहाँ पे रहने की ज़रूरत है. अभी इसमें एक्शनेबल ट्रेड में कुछ नहीं दे सकता, आज एटलीस्ट नहीं दे सकता. मे बी कल या परसों कुछ इसमें मिले तो मिले. फिलहाल एक ट्रेडिंग रेंज के तौर पे देखें तो 40,000 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है and 46,000 is a major resistance on the Bitcoin. Okay, but again, very tricky to say what will happen. We can go all the way here also at 36,000 to retest this breakout. We may take support and bounce also. So lot of possibilities are there. Concrete इस समय कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है. So best is to pass it on for the time being. Yes, 40,000 is a good support, and this even 39,000 is also a nice support from where recently we have broken out. So देखिए, अगर आपको यहाँ पे इस जोन में कुछ अगर मिले तो आप इसे स्टॉप लॉस के साथ जो है शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हैं. ओके, आई थिंक टेक्निकली दिस लुक्स wise. This looks 30, 38, 37,000, and then again 47,000. I think this should happen. Okay, if everything remains the same, so you can try for this move. It's a good zone. Definitely यहाँ पे stop loss के साथ try करना चाहिए. It is worth taking the shot. This is definitely a good place. 37,000, 30. What is this? 30, 38,000, 38,800, and 40,600. So this 2,000 point, 1,500 points, it's a good zone to buy. ठीक है. ओके, इथेरियम पे एक बार बात करते हैं और सीधे निफ्टी बैंक निफ्टी पे आते हैं. सो इथेरियम अगेन वेरी नाइसली टारगेट्स डन 3290, 3300, एंड देन वी आर सीइंग अ करेक्शन. सो इथेरियम थोड़ा और डीपर पुल बैक देगा, मैं समझता हूँ 2650, एंड पोस्ट दैट वी मे सी one more trip towards 3300. So if you want to buy, I would suggest keep a deeper pullback to buy because of the geopolitical. I think 2650 is a good place where you can definitely try to buy. This was the panic bottom in last 6 months back, and this is also a very nice zone. So I think 2650 is a good level. It should come here. It should come here, and it's at 2650. You can try to buy with a perfect stop loss, maybe 2400, and again you can see a pullback towards 3300. So it can be a very good trade as well. Okay, so ये कवर करेंगे, बाकी क्रिप्टोज को थोड़ा कल लेते हैं. ठीक है, एंड लेट अस मूव टुवर्ड्स द इक्विटी सेक्शन. सो निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होगा इससे हम देखते हैं. ठीक है, लेट अस ओपन द निफ्टी चार्ट. सो गाइज, चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. अभी 40 मिनट हो चुके हैं और सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ. शायद आज मैं ही बोलूँगा. स्टॉक क्वेरीज शायद हम नहीं लेंगे. सो जो लोग स्टॉक क्वेरीज के होप में बैठे हैं, आई एम सो सॉरी. ओके, सो थिंग्स आर वेरी मेस्ड अप, बट नेवरदलेस फ्राइडे का जो प्राइस एक्शन था निफ्टी में, इट वाज वेरी वेरी स्वीट. इट्स वेरी वेरी स्वीट. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ दिस बेल शेप? It was somewhere here. Okay, it was a few weeks back, a few days back here, and next day you got a complete sell off. कल exactly ये चीज होना चाहिए. ठीक है, कल ये जो डेट है, what is this date? This is 7th Feb repeat होना चाहिए कल के दिन. And this was such a juicy short trade on Nifty and Bank Nifty. In the student group, I just mentioned that it's a very credible शॉर्ट ट्रेड, बहुत ही जूसी शॉर्ट ट्रेड है यहाँ पे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट निफ्टी. सो हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था और बाजार में क्या हुआ, और हमने ग्रुप मेंबर्स को कैसे क्या क्या अपडेट दिया. नंबर 1, so last week, last Sunday, we said that markets are going to remain volatile. Number 1, 17,000 is a good base and 18,000 is a good resistance. We will look to buy. Market should go down first. Okay, we were short since Friday. Market went down,
and we should look to buy at 17,000. Market bottomed here. I gave a buy call at 17,080, then market went 17,625. यहाँ पे हमने टर्बुलेंस का मैसेज जो है ग्रुप में डाल दिया. We were out and turbulence started after our exit. ठीक है. So once again ये जो मूव था absolutely perfect. Now what can happen in next 24 hours? जैसा कि हमने अभी जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप अभी सुना है, रेट हाइक मंडे को हो सकता है, या मे बी दे कैन गिव सम प्रिसाइज डेट. रशिया कैन डू एनीथिंग. ओके, already Israel and I think those markets will trade negatively. They are trading, I think, negatively. With crude oil surpassing the $93, with USD INR, shooting higher above 75, weekly closing above 75. All this is going to create a one nice drop in the Nifty towards what? Towards 16,000, at least I think 16,800. Okay, so आई थिंक नेक्स्ट वीक के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं. नंबर वन, दैट इनिशियली अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट दिस. वी आर गोइंग टू फॉल टिल 16,800. आई थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, 16,800 जस्ट वेयर द प्रीवियस बॉटम वर देयर. ये एक जोन मैं इस मार्केट में फिलहाल देख रहा हूँ. इन सिंपल वर्ड्स, आई सी दिस मार्केट राइट नाउ फ्रॉम last week it was 17 to 18,000. I'm shifting it by a minimum 200 points, and when I'm saying minimum, that is actually the minimum. So 16,800 is now the base, and this base is very shaky. It can actually give away also. So last week the base was very strong, but this week the base has shifted down and it's 50-50 situation. ओके, सो लेवल्स मैं बताता हूँ और लेवल्स के हिसाब से हम इस वीक में काम कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल चीज़ है कि मॉब लेवल जो होगा, ओके, लेट मी कीप इट वेरी सिंपल. सो द मेक और ब्रेक लेवल विल बी योर फ्राइडेज हाई. Okay, so your weekly make or break level for Nifty spot will be 17,480. Below this it is definitely bearish, and first target is 17,000, second target is 16,800, third target is 16,600. Now I expect market to take support at 16,800 and again bounce back. Bounce back to where? Bounce back to 17,600. But will it be easy ride? I don't think so. I don't think so. लास्ट वीक वी वर डैम श्योर कि नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, ये बहुत ही ईजी था. ठीक है, इस वीक बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज वी आर नॉट श्योर, but 16,800 is that deserves a credible bottom for at least next few days, and that should generate a bounce. If not 17,600, then at least 17,400. Okay, now if 16,800 is giving away on closing basis, then that is something which is very scary. And why it is scary? Just go and have a look at the small cap chart. ठीक है, so somebody is messaging that right now everybody is expecting a drop, so market will definitely not fall. ठीक है, कल मिलते हैं बाजार में. ठीक है, so these are the levels that we have to go through. I will be very keenly watching two levels, and that is 16,800 and 17,480. Okay, one trip like this, and from here, from this 16,800 to 16,600, some long wick panic bottom in the sense not a trend bottom, a swing bottom. ठीक है, आपको याद होगा लास्ट वीक ही मैंने कह दिया था कि कोई न्यू हाई आने नहीं वाला है कम से कम 180 डेज तक, राइट फ्रॉम दिस. लास्ट वीक मैंने टाइम साइकिल आपको बताया था कि why there is no new high going to come at least till 180 days. ठीक है, so 16,006 से 800 के बीच में देखते हैं. इफ वी गेट अ गुड रिवर्सल, देन डेफिनेटली एक लॉन्ग हम यहाँ पे ट्राई करेंगे फॉर अगेन 17,480, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस. अगर नेक्स्ट टाइम हम इसे ब्रेक करते हैं, देन अगेन व्हाट विल हैपन इज वी वुड हैव मेड अ स्ट्रक्चर व्हिच इज समथिंग like this. AB is equal to CD somewhere here, flush through this, and again up, or maybe till here, and again backdrop.
ठीक है। सो इस तरीके से कुछ देख रहा हूं मैं, और 17,480 इसके ऊपर दिस मार्केट विल बिकम ऑब्वियसली बुलिश, एंड देन फर्स्ट टारगेट 17,800 एंड देन 18,100। ठीक है। सो आई थिंक अगर लेवल टू लेवल के हिसाब से देखें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये होगी कि न्यूज़ फ्लो एंड द इमोशनल रिस्पॉन्स, दीज थिंग्स विल बी लिटिल डाइसी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आपको बेरिशंस दिखेगा तो आपको लॉन्ग करने में डर लगेगा, and suppose you actually went long and then actually some bad thing happened and there will be a huge gap down. So those are the things that you need to manage. So I think that's all I have to say on Nifty. बातें बहुत हैं but अभी time कम है, so let me limit it here. Now one thing you see on this chart is the addition of these black lines that I have drawn. Okay, so what are these lines? These are a typical hallmark of a bear market, and they suggest something. They are suggesting something that 16,595 yani 16,600 somewhere here. So this is the pitchfork that I'm following right now. So what should happen is we should move here and take support in a panic, take support here and again bounce back till that same 17,600. इसलिए मैंने वो levels आपको इस तरीके से दिए हैं, ठीक है। So let us see what happens. I still believe we will fall like this and there will be one technical pullback, and that is definitely going to decide the next fate, because अगर अगली बार हम इसके बाहर नहीं निकले then all hopes are gone, ठीक है, and the third wave will be very nasty, because that's how these pitchforks work. So level के हिसाब से चलते हैं and let us move towards bank nifty. Couple of things which we need to be careful on closing basis. It is this, the triangle on closing basis line chart. This is certainly not looking good. Okay, RSI head and shoulder, चलो ये तो खैर बाद में देखेंगे, but this is certainly not looking good. ठीक है, for the time being 16,800 is a good level which can create some bottom. Now बैंक निफ्टी सीधे मैं लेवल पे आऊंगा, कॉन्टेक्स्ट वगैरह अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेवल ये होगा बैंक निफ्टी का that 38,800, this is going to be the make or break level. Till we are below this 38,800, okay, bank nifty is most likely to reach again towards 37,400 on a very conservative basis. So I believe we are going to again break this time, this rising wedge structure that we were discussing. I think we are going to break it momentarily, and then if things remain good we may bounce. So इसमें मैं लेवल के साथ ही जाता हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं. We will go with the level of say 38,800 as a mob level, which is Friday's high, and on the lower side first target will be 37,400, and if this goes by then no support till 36,500. Okay, if global markets, I mean the fundamentals, they remain okay, then I think we should take support here, which is again this level 37,200 and 37,400, and this should give a nice bounce. Okay, at least again back to this 39,700. So watch out for bank nifty. I think that is going to be something which is very interesting. Okay, because in this scenario we can still somehow manage to maintain this wedge structure जो हमने last time discuss किया था. तो 38,800 इसे ध्यान देंगे ऊपर में, 37,400 से 37,200 यहाँ पे ध्यान देंगे as a downside first target. From here if we get a good reversal and global markets बहुत ज़्यादा risky नहीं लगा तो long trade लेंगे with a stop loss, or else just ignore it, because अगर ये breach हुआ तो 36,500 is the sure done deal, and that will again change lot of things also जो हम बाद में discuss करेंगे. ठीक है, so I think that's all. Let us move towards stock queries. We have completed the 1 hour. We have completed the 1 hour of live stream. Yes, 55 minutes. Okay. Chali, let us talk about stocks now. One thing which is really bothering me, I just happened to look at the small cap index down by 2.5%. This is certainly suggesting a higher dollar regime.
बिकॉज दिस स्मॉल कैप्स, अगर आपको याद होगा तो डॉलर डेट की बात हमने की थी कि मोस्ट ऑफ दीज स्मॉल कैप कंपनीज दे हैव डॉलर डेट, चीप फंडिंग, एंड दी लुक एट दिस नेस्टी हेड एंड शोल्डर, वेरी 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 डाइसी, बहुत ही ट्रिकी है बॉस। अगर ये ब्रेक हो गया एक दो दिन में, ठीक है, एज पर दिस rate hike is 100% coming, ठीक है, maybe Monday or maybe a few weeks, but it is definitely coming. This is really very very bizarre, very very risky, damn risky, ठीक है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा हीरोपंती करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर बैकफुट पे रहेंगे, थोड़े मूव्स अगर मिस हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी ओवर प्रॉफिटेबिलिटी, आई थिंक दैट शुड बी रिटर्न ऑफ कैपिटल, नॉट रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। सो ये चीज़ है। बाकी मिड कैप इंडेक्स फिर भी थोड़ा सा, मिड कैप में भी वही प्रॉब्लम है, बट आई थिंक इट इज स्टिल ओके, इट इज स्टिल बेटर देन दी स्मॉल कैप। और CNX 500 अगर देखें तो अगेन उसमें भी ये सिचुएशन है, बट दैट इज स्टिल मैनेजेबल, दैट इज स्टिल ओके। बट स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। ओके, चलिए आपकी स्टॉक क्वेरीज लेते हैं, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे और डिसलाइक कर देंगे। सो लेट अस टेक योर स्टॉक क्वेरीज। वैसे डिसलाइक कर दो, कोई इशू नहीं है, लाइक डिसलाइक कमेंट जरूर करिए। IGL पहला क्वेरी, हमारे मित्र रुपेश IGL की क्वेरी है, इंद्रप्रस्थ गैस। सो IGL इस समय वो 400-390 के जोन में है। हालांकि स्टॉक में मुझे ज़्यादा रुचि नहीं है, टेक्निकल बाउंस वगैरह आ सकता है, बट नथिंग। IGL को मैंने लास्ट टाइम ही मना किया था कि 500 के नीचे, 520 के नीचे इसे टच नहीं करना है, एंड सिंस देन स्टॉक हैज़ फॉलन बाय 150 पॉइंट्स। तो यू नो जब क्रिटिकल कोई चीज़ बोला गया है तो उसे सुनना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मारुति सुजुकी auto pack, long term good, mid term good, wait for some decent correction, still stock technical up move, index मैनेज करने के लिए 9200 को टेस्ट कर सकता है, बट एक अच्छी एंट्री के लिए मैं समझता हूँ आपको वेट करना चाहिए। ऊपर ऊपर में गलती से भी मत फंसना, स्पेशली एफएनओ में। ओके, मारुति लॉन्ग टर्म में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन प्रीवियस सेशंस ऑल्सो दैट इट इज़ अ हाईली बुलिश काउंटर। ओके, एंड न्यू हाईज एंड 10 12 13 14 15,000 17,000 लेवल्स भी मारुति में आएंगे आने वाले कुछ सालों में। बट अभी ओके, ऊपर ऊपर में मत बाय करो, करेक्शन आने दो। मार्केट ऑलरेडी डाइसी है, तो करेक्शन देगा, जब पैनिक करेक्शन देगा तो आप बाय करो। व्हाट इज दैट पैनिक लेवल? 7,900, अप्रोक्सीमेटली 8,000, यानी 8,000 मिले मारुति तो वापस से डेफिनेटली बाय कीजिए। 7,500 के स्टॉप लॉस से टारगेट सीधे 10,000, ठीक है। बट डीप बाइंग करना है, ऊपर में नहीं फंसना है, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका जाएगा, बट स्टिल वाई, इट्स अ रिक्वेस्ट, वाई टू, जब हमें पता है तो क्यों वो गलती करना, ठीक है। सो दैट्स दी अपडेट। जी मीडिया पे एक जी मीडिया या जी मीडिया पे क्वेरी देखो, जी वी ये सब जो है ना, ये सब पे मेरा जी मीडिया तो वैसे बुलिश है, जील पे तो मैं हमेशा बेरिश हूँ। सो जी मीडिया में देखो, न्यू स्विंग हाई हैज बीन क्रिएटेड, प्रॉफिट बुक करिए। वी फॉलो वन वेरी इजी प्रिंसिपल, आज मैंने ट्रेनिंग में भी वही एक्सप्लेन किया, दैट व्हेनेवर अ स्टॉक मेक्स अ न्यू स्विंग हाई, प्रॉफिट बुक करिए, ठीक है। सो एज यू कैन सी, यहाँ भी न्यू स्विंग हाई बना, 14 पहला हाई था, देन 16, देन अगेन इट फेल। सो सिमिलर थिंग 18, नाउ इट इज ऑलमोस्ट 20, सो बुक करिए। ऑलरेडी प्रमोटर यहाँ पे बेच चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जील पे भी क्वेरी थी, जील पे टुडे लॉट ऑफ मैसेजेस आर देयर और टाइम बहुत कम है, सिर्फ 10 मिनट और मैं ले सकता हूँ दोस्तों। सो आपकी बहुत सारी ओके। सो जील देखो, जील तो यार ये खच्चड़ कंपनी है, परमा बेयर है, सो अगेन गॉन, ये खत्म है बॉस। जील पे मेरा टारगेट है ये गैप फिलिंग 185 का, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो जील में आप लोग क्यों बाय क्यों करते हो जील में? नेक्स्ट कैनरा बैंक वगैरह सब हो चुका है। कैनरा बैंक 204 से 270 290 सब हो गया, किसका वेट कर रहे हो आप? निकलो ना यार। 247 पुराना हाई, 270 का टारगेट दिया, 270 का टारगेट हाई है 273, स्टॉक 20 रुपया गिर चुका है, किसका वेट कर रहे हो आप? बुक करो ना यहाँ पे। सी यही यही प्रॉब्लम है,
शानदार एनालिसिस होने के बाद आप लोग ग्रीड में लालच में आ जाते हो और फिर फंस जाते हो। निकलो निकलो भाई, निकलो यहाँ से, इसमें से बुक करिए। पीएसयू बैंक में बॉस एक चीज ध्यान रखो, सरकारी बैंक्स में ना कभी भी ऊपर में मत फंसना, नहीं तो आपकी फाइल यहाँ से वहां बस ट्रांसफर होते रहेगी। समझ गए बात को? नेवर गेट ट्रैप इन पीएसयू बैंक्स एट हायर लेवल्स, बाय देम ईदर ऑन सम मैसिव ब्रेकआउट, जैसे यहाँ पे मैं कैनरा बैंक में बुलिश हुआ, करेक्ट, इफ यू रिमेंबर, यहाँ से बुलिश, यहाँ से बुलिश, यहाँ से 204 से अभी रिसेंटली बुलिश, अब नो बुलिश। अब अगर हैवी करेक्शन होता है 220 वगैरह, प्रॉब्ली देन आई विल सी, बट हियर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बहुत सारे स्टॉक क्वेरीज है, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या। वेदांता एक दिख रहा है, वेदांता ले लेते हैं। सी वेदांता का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लॉन्ग टर्म भयानक बुलिश है। Maybe I think it will be merged or something like that will happen because it is the chart is very bullish, ठीक है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में 385 पुराना हाई है, आई थिंक इट इज गोइंग टू मूव मच मच हायर, 400 420 वगैरह। सो अगर आप कैश में है तो यू कैन होल्ड, you can book some profit when this new high is made and you can hold balance to your cost। फ्रेश एंट्री अभी नहीं है, फ्रेश एंट्री के लिए हमें वेट करना होगा एक अच्छे करेक्शन का। Larsen and Tubro. So L&T I have explained, it's a good counter, 21 2200 ये जो है अच्छे टारगेट्स हैं। अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वेट करो, अगर आपको वैल्यू बाइंग करना है तो आपको 1750 1730 इस बॉटम के साथ स्टॉप लॉस के साथ आपको करना होगा, ठीक है। राइट नाउ हेड एंड शोल्डर बना के बैठा है, तो आई थिंक थोड़ा सा इसमें डाउन मूव आएगा। सो अभी आप रुक जाइए, बट अगर आपको बाइंग करना है तो यूज दिस 1730 एज अ स्टॉप लॉस एंड बाय समवेयर हियर, ओके। Overall it's a good counter, it's a good counter, okay। I just hope ये इसको ब्रेक ना करे, बिकॉज देन थोड़ा वीकनेस वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी तो चार्ट इज वेरी नाइस, ओके, बट एज आई एक्सप्लेन लास्ट टाइम ये नहीं ब्रेक होना चाहिए, ये आपका आखिरी सपोर्ट है, इट्स 1720 के आसपास, यानी अराउंड अबाउट दैट 1700 1730 के आसपास यहाँ पे वॉच करना है। इवन यू नो इफ इट होल्ड्स and then consolidate and then starts a rally again, I will buy, okay, because it's a nice structure and very easily it can go till 2200 2100। so ये चीज है। अगर आपने बहुत ऊपर में बाई किया है तो बॉस कल गैप डाउन पे निकल जाना एक बार, बिकॉज 1850 के नीचे इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हिट 1720 1730, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर ब्रेक डाउन हो जाएगा। HDFC बैंक सेम व्यू है, HDFC बैंक में नाउ लेट अस सी टुमारो व्हाट हैपेंस, ओके। इसमें कैश इन्वेस्टमेंट में जो 1400 से 1500 में एक्यूमुलेट करने के लिए कहा है वही व्यू है, कोई चेंज नहीं है। जब तक व्यू इंटैक्ट है, जब तक हम 1400 के नीचे नहीं जाते, इट इज ओके, ठीक है। गोदरेज कंज्यूमर इज वन क्वेरी, गोदरेज कंज्यूमर, सो गोदरेज कंज्यूमर इट हैज अगेन ब्रोकन, सो इसमें कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। देयर इज नो ट्रेड इन गोदरेज सीपी। अभी थोड़े दिन पहले जब ये यहाँ से बाउंस आया था तब मैंने बोला भी था इसमें से निकलो, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाट पीपल आर डूइंग राइट नाउ, देयर इज अ मैसिव गैप, आई थिंक इट इज गोइंग 720 सूनर और लेटर, एंड एनी पुल बैक विल बी सोल्ड ऑफ। 900 वगैरह जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, आई थिंक इट विल डेफिनेटली बी sold off on any bounce, it is making this running channel, eventually it will target this zone, this gap zone, probably then it will make a long term bottom। so Godrej CP, Godrej consumer product अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, बट अभी शॉर्ट टर्म नहीं, अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी, लास्ट टाइम आई थिंक आई हैड एक्सप्लेन्ड 4 स्पेशलिटी केमिकल्स हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक में। हिमाद्री में आई थिंक न्यू हाइस वगैरह बन चुके हैं 70 वगैरह, सो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है। इफ यू वांट टू होल्ड दिस, if you want to hold this then still थोड़ा सा रिस्की है। 65 रुपीज के नीचे ये रिस्की है, अगर ये 65 के ऊपर थोड़ा अच्छे से सस्टेन करता then I would have definitely asked you to hold, but right now it is looking that it will go again to 53। नेक्स्ट टाइम अगर 65 के ऊपर चलता है ना तो फिर इसे हम वापस से बाय बैक कर सकते हैं। IEX एनर्जी इंडियन एक्सचेंज अगेन बेरिश काउंटर, ठीक है। इसे हमने यहीं पे वार्निंग दे दिया था कि बाय नहीं करना, पहले हम लॉन्ग थे बट बहुत ही टाइमली अपडेट इसको मैंने कर दिया था कि इसको मत ये करना।
So it is going this 191. IEX going 191. IRCTC again, that is also going down. So these stocks I have already discussed very very in detail. Godrej Properties, दोस्तों चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह नहीं आ रहा है. अडानी अंबानी मोदी, यस यस, ऑल दोस थिंग्स, ये सब होगा. गोदरेज प्रॉपर्टीज एज ऑफ नाउ कुछ नहीं है. देयर इज अगेन बिग गैप डाउन एंड नथिंग मच इज हैपनिंग, सो जस्ट इग्नोर प्रॉपर्टीज. देखो मैंने आपको बताया था ना, बजट के बाद ये डीएलएफ एंड प्रॉपर्टीज एंड ये सब भूल जाओ यार. कौन खरीदता है प्रॉपर्टी? ठीक है. सो दैट आई थिंक लास्ट 2 साल का जो एक था ना, आई थिंक दैट इज डन एंड डस्टेड, हो गया. अब ये सब में मत फंसना. लुक एट डीएलएफ, सी राइट अवे आई ओपन दिस डीएलएफ, बेरिश काउंटर है, ऑल हेड एंड शोल्डर डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, सिर्फ सेल ऑन राइज. डीएलएफ सेल ऑन राइज, बात खत्म. ये अब हमारे रडार पे वापस आ रहा है. बट कहाँ सेल करेंगे? एट दीज लेवल्स 420, 415, 420, 415 से 425. ओके, यहाँ पे शॉर्ट करिए एंड ऑल it will keep making lower lows, 360, 350, 340, and slowly it will drift down. Fine, so don't get trapped. अगर आपको रियलिटी प्ले करना है, आई थिंक डेल्टा कॉर्प भी तो खैर हो ही चुका है. डेल्टा कॉर्प का भी बहुत अच्छा 4 रोटेशंस इसमें हमने बनाए थे. दिस इज स्टिल होल्डिंग अप, बट आई थिंक अब इसे भी अवॉइड करना चाहिए. डेल्टा कॉर्प में 1 2 3 यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमने बताई थी. Delta Corp, I liked the stock. Everything is very nice, but I think थोड़ा सा इसमें भी अब करेक्शन होगा. ठीक है. सो डेल्टा कॉर्प अगर आपको अगली बार एक अच्छे लेवल पे मिले तो ही बाय करेंगे, नहीं तो जस्ट वेट फॉर द ब्रेकआउट. सो डेल्टा कॉर्प में अगर किसी की क्वेरी है या किसी के पास है तो आई थिंक प्रॉफिट बुक कर लो. नेक्स्ट टाइम आई विल टच दिस स्टॉक ओनली अबाउट द ब्रेकआउट. आई विल नॉट टच इवन एट lower levels. I will wait for the breakout, because once this structure breaks out, it will immediately move up by 35%. So I don't want to buy on weakness. I want to buy on strength. ये लॉजिक इसमें मैं यूज करूंगा. टाटा मोटर्स, ओके. Last query for tonight. We have already crossed 1 hour 10 minutes. So Tata Motors, as of now, long term 620 target is intact. Short term, obviously, थोड़ा और इसमें decline होगा. Okay, and I think 480 will be hit tomorrow itself. Major support 470 460 के जोन में. तो अगर किसी को fresh buy करना है, I think you should wait for some time. Okay, वेट करिए. अगर आपको कुछ एक डीपर लेवल्स यहाँ मिल गए तो कैश में थोड़ा बाई कीजिए. 440 स्टॉप लॉस लेके चलना है, 440. ठीक है. एंड सून इफ वी मैनेज टू गेट दिस ब्रेकआउट, देन सीधे 620 का टारगेट हिट हो जाएगा. ठीक है. सो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ओवर पोजिशनिंग किसी भी स्टॉक में मत करना. ओके, बहुत ज़्यादा एवरेजिंग वगैरह मत करना किसी भी स्टॉक में. Go very moderate. Divi's Lab. Okay, so tomorrow is some Valentine or whatever they call it. And pharma, I was hoping that by mid-Feb we should get some clarity, but pharma में अभी भी clarity नहीं है. ठीक है. Now Divi's Lab, सीधे निकल जाओ. You have to exit. We are at a falling trend line resistance. We have last breakdown retest. We have 65-day moving average. We have 200 moving average. सीधे निकल जाना है. ठीक है. आई वुड हैव एग्जिटेड. एफल इंडिया ले लेते हैं. बहुत देर से क्वेरी है, क्वेरी बहुत पेंडिंग है, बट टाइम की कमी हो चुकी है. सुपर चैट आप जो करेगा उसका मैसेज हाईलाइट हो जाएगा. एफल इंडिया अगेन अवॉइड, टोटल अवॉइड. निकल जाओ, सीधे निकल जाओ. सपोर्ट ये मत देखो, ये सब टूटने वाले हैं. एफल इंडिया 1045. विप्रो काफ़ी देर से पेंडिंग है. विप्रो, तो विप्रो में पहले मुझे बता दो कि आईटी में मेरा क्या व्यू है पिछले 20 दिन से, 30 दिन से या 15 दिन से. व्हाट इज द व्यू ऑन ऑल आईटी स्टॉक्स? एग्जिट. करेक्ट है कि नहीं है? लुक एट द नंबर ऑफ क्वेरीज ऑन विप्रो. बॉस, यू आर बैडली ट्रैप्ड. अभी थोड़े दिन पहले भी ये पुल बैक आया था. 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक, ये रिटेस्ट. निकलो ना इसमें से.
इट्स गॉन, डबल टॉप, ब्रेक डाउन, 200 ये सब खत्म हो चुके हैं। आईटी निकल जाओ, अगर फंस गए तो बुरा फंस जाओगे। करेक्ट। जो रेगुलर ऑडियंस हैं देखो उन्हें याद रहता है। ठीक है, एसबीआई पे क्वेरी है। एसबीआई आई थिंक मूव तो अच्छा खासा हो चुका है, अब 370 के चक्कर में क्या वेट करना है। आई थिंक सी, आई थिंक देखो स्कोप है, बट आई थिंक फॉर द टाइम बिंग मेक एन एग्जिट। ओके, 545 इज गुड। अगर सेकेंड राउंड में एक और अगर लॉन्ग ट्रेड मिला अराउंड 485 समथिंग, तो ठीक है, एक और बार प्ले करेंगे। लेट मी जस्ट शो यू दी लॉन्ग टर्म पिक्चर ऑफ एसबीआई, सो दैट आपको थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। देखो एसबीआई का ये स्टोरी चालू है, ठीक है, ये मंथली चार्ट है। तो हम हर इस कैंडल के बॉटम पे बाय करते हैं, इस ब्लू लाइन पे सेल कर देते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ चैनल ऑन मंथली। ठीक है, अभी लास्ट लास्ट मंथ 440 से 570 सजेस्ट किया था। वी आर ऑलरेडी एट द अपर एंड, सो there is no margin of safety to take that risk. It's better buy here, sell here, buy here, sell here. Understanding? ये बड़ा पर्सपेक्टिव है, तो आप बड़ा पर्सपेक्टिव समझिए और उसके हिसाब से इसमें से निकल जाइए। शॉर्ट टर्म में ठीक है, 10 20 30 रुपए ऊपर नीचे जा सकता है, बट प्ले द स्वीट पोर्शन ऑफ दैट ट्रेंड। ठीक है, so I think I've taken as many queries as possible. It is time to wind up, and last query हम ले लेते हैं दोस्तों, Godrej what agro or something, and then I have to make a move. Godrej agrovet. ठीक है, so Godrej agrovet, again all Godrej stocks are crashing, so just avoid. ठीक है, just avoid for the time being. Okay, so anyways I will have to wind up now. जिनकी क्वेरीज नहीं ले पाया, आई एम सो सॉरी, टाइम की लिमिटेशन है। 1 घंटा 15 मिनट ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम हो चुका है। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, कल सारी क्वेरीज ली जाएंगी। टुमारो we will have a lot to talk, and mostly I will take all the queries and talk less about the macros पे, क्योंकि मैं 3 दिन से आया नहीं था और थोड़ी डेवलपमेंट्स हो गए तो बात करना पड़ा। बट कल हम सारी स्टॉक क्वेरीज लेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, ट्रेड सेफ, and thank you so much for watching. Good night, let us meet tomorrow. Jai Mata Di.